एक प्रॉब्लम है डायरेक्टेड स्टडी कि इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप सबको आंसर देना है इसका। एक 5 साल का बच्चा है जिसे हॉस्पिटल लाया गया है विद द कंप्लेंट ऑफ फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन। और एग्जामिनेशन पर पता लगता है कि ही इज फाउंड टू बी डल बट इरिटेबल विद फास्ट पल्स 116 ओब्लिक मिनट पर मिनट। उसकी जो पल्स है वो है 116। रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है and RR50 per minute and in drawing of lower chest uh, during inspiration। wheezing की sound है, crepitations and mild dehydration। body temperature is 40 degree Celsius 104 degree Fahrenheit। The pediatrician makes a provisional diagnosis of acute pneumonia and orders relevant hematological as well as bacteriological investigation। He decides to institute antibiotic therapy। Now, अब है in case he selects an antibiotic which can be given orally as well as by intramuscular or IV injection, which route of administration will be most appropriate in this case। और दूसरा है कि डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रूट सेलेक्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड शुड द पीडियाट्रिशियन एडमिनिस्ट्रेट द एंटीबायोटिक स्ट्रेट अवे और शुड ही वेट फॉर द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि जैसे कि ये बच्चा आया है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है कि सिंस द चाइल्ड इज सीरियसली इल अ फास्ट एंड प्रेडिक्टेबल एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज नीडेड। Therefore, a parenteral route of administration is appropriate. Moreover, oral dosing may be difficult in this case because the child is dull and irritable. IV injection should be preferred route of administering the antibiotic because drug action is sure shot, fastest, blood vessels attained are the highest, and bioavailability is 100%. Since the child is dehydrated, it is likely that IV line would be set up for correcting that dehydration. The same can be easily utilized for IV administration of the antibiotic. However, if entering the vein is difficult due to the small size of the child and dehydration, the antibiotic may be injected intramuscular as the alternative route. In this case, the provisionally selected antibiotic should be started as early as possible because the child is seriously ill. Waiting for the lab report to confirm the diagnosis, select and definitive antibiotic may compromise the prognosis.